Assalamu alaikum students, welcome in history class. We are studying the constitutional development in Pakistan, and today we will discuss the Constitution of Pakistan 1956. What is the outcome of this lecture? After this lecture you will be able to explain the salient features of Constitution of 1956. So we can say कि आप इस लेक्चर के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि जो सैलिएंट फीचर्स हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के उनको एक्सप्लेन कर सकें. And now, before proceeding to our lecture, I will clarify what we will discuss in this lecture. There will be two things. That is, at first we will discuss what is constitution and what are the type of constitution, written and unwritten. And then we proceed to the Constitution of 1956 and its salient features. I hope you have understand what we will discuss and mentally clear that we will discuss at first the definition of constitution and types of constitution, then we proceed to 1956 constitution and its salient features, and we will discuss its salient features one by one. But at first, we will discuss what is constitution. Let's move ahead and discuss what is constitution. Constitution is the body of policies and practices that form the essential organizing principle of the state. Constitution is a body of policies and practices that form the essential organizing principle of the state. This is the definition of constitution. It should be very clear to each of you that what is constitution. तो constitution policies और practices की एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसी बॉडी है जो किसी भी स्टेट के जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल हैं उनको सेट करती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है. तो किसी भी स्टेट के जो अफेयर्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली रन करने के लिए और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफ़ेक्टिवली चलाने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आइन. अब हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस की दुनिया में कौन कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर टू. नंबर वन, written constitution and unwritten constitution. In case of written constitution, we can say Pakistan has a written constitution, and in case of unwritten constitution we can say that United Kingdom is the best example of a country which have unwritten constitution. The documents and traditions are considered their constitution. United Kingdom is a country which have unwritten constitution. Now we should move ahead to the salient features. Constitution of 1956 and its salient features. It was a detailed written constitution. ये एक डिटेल written constitution था. It contained 234 article. इसके 234 articles थे. It was divided into 13 parts. इसके parts जो हैं वो 13 थे. It consisted on 6 schedules.
इसके 6 शेड्यूल थे, 6 शेड्यूल, 13 पार्ट, 34 आर्टिकल, और ये एक डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। इसमें क्या क्या अडॉप्ट किया गया था ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें जी अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इट ऑन 29 फरवरी 1956। तो ये अडॉप्ट कब किया गया था? 29 फरवरी 1956 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस वक़्त की, उसने इसको अडॉप्ट किया था। इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956। अडॉप्ट कर लिया गया था 29 फरवरी को, और लेकिन एनफोर्स जो किया गया था वो 23 मार्च 1956 को ये मुल्क में नाफिज कर दिया गया था। कंट्री वाज डिक्लेयर्ड एज एन इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट। इसमें पहली दफ़ा जो है स्टेट को वो इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था। in this system of government was federal। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको प्रैक्टिस किया गया था। यूनिकैमरल सिस्टम जहाँ जिसमें सिर्फ एक ही असेंबली थी, नेशनल असेंबली, सेनेट नहीं होता था। और दूसरा इसके अंदर पैरिटी प्रिंसिपल वाज अडेप्टेड, यानी कि बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको और जो वेस्ट पाकिस्तान था सारे का सारा मिला के वेस्ट पाकिस्तान वाज वन प्रोविंस, ईस्ट पाकिस्तान वाज वन प्रोविंस। इट वाज कॉल्ड वन यूनिट फार्मूला। पैरिटी प्रिंसिपल वाज अडेप्टेड के दोनों को इक्वल वेटेज दे दी गई, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट को। इनको एक एक सूबा बना दिया गया और दोनों मिलके जो है टोटल 2 सूबे पाकिस्तान के थे। तो उर्दू एंड बंगाली वर मेड ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उर्दू बंगाली का एक कंट्रोवर्सी चली आ रही थी, इस वजह से इसमें उसको एड्रेस करने के लिए उर्दू और बंगाली दोनों को सरकारी ज़ुबानों के तौर पे अडॉप्ट कर लिया गया था, तस्लीम कर लिया गया था। लेकिन ये भी साथ कहा गया कि इंग्लिश वाज एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर 25 ईयर्स। तो 25 साल के लिए इंग्लिश को सरकारी ज़ुबान के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अनलकीली, बदकिस्मती से, दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्ड एनफोर्स्ड फॉर 2 ईयर्स। ये सिर्फ 2 साल के लिए या 2.25 साल के लिए ये एनफोर्स रहा। उसके बाद क्या हुआ? जनरल अयूब खान इम्पोज मार्शल लॉ ऑन 7 अक्टूबर 1957। On 7 October 1958, General Ayub Khan imposed martial law. He abrogated the 1956 Constitution। यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो कहानी है वो ख़त्म हो गई और जनरल अयूब खान का जो डिक्टेटरशिप का दौर है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ अरसे बाद अपनी हुकूमत को एक लेजिटिमेसी देने के लिए एक कानून साजी का अमल भी इनिशिएट कर दिया गया सदर अयूब की तरफ से, ताकि अपनी एक जो डिक्टेटरशिप है उसको एक लेजिटिमेसी दी जाए। तो उसके नतीजे में 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके सैलिएंट फीचर्स। फिर हम 1973 के सैलिएंट फीचर को डिस्कस करके फिर एक लेक्चर में हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।